welcome to the next chapter of the syllabus, and here we are going to start the plant physiology. Clear? The first chapter of plant physio is transport in plants. So here we are going to discuss about the transportation in plants. Okay? Firstly, we have to know about what are the things which has to be transported in the plant. कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट की जरूरत है, मतलब किस किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में होता है. सो फर्स्टली वी हैव टू नो अबाउट द थिंग्स विच हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड. सो हियर इज द थिंग्स विच हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड in the plants. So in plants, first and the important thing is water. Water has to be transported. The second important thing is the minerals, and the third one is the food which is synthesized by the plants by the process of photosynthesis. So here is the first important thing which has to be transported is water. Second one is minerals, and thirdly we have the food which is synthesized by the plants during the process of photosynthesis. Clear? The transport of plants is mainly short distances or for long distances. ठीक है, प्लांट्स में काफी सारी जगह पे शॉर्ट डिस्टेंसेस पे ट्रांसपोर्ट भी होता है और काफी सारी जगहों पे लॉन्ग डिस्टेंसेस पे ट्रांसपोर्ट भी होता है. सो फॉर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इज सफिशिएंट. क्लियर? शॉर्ट डिस्टेंसेस पे डिफ्यूजन की प्रोसेस से ट्रांसपोर्ट काफी है ना, डिफ्यूजन की प्रोसेस से ट्रांसपोर्ट हो जाता है. लेकिन लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए वेस्कुलर बंडल्स की रिक्वायरमेंट होती है. सो हियर इज short distance transport, and long distance transport. For short distance, diffusion is sufficient, so it is takes place by the process of diffusion and sometimes it may be by cytoplasmic streaming. So cytoplasmic streaming is also sufficient. Clear? So this is the method for the transport of substances for short distances in the plant, and for long distances there should be a special type of system that is called as vascular bundles are present. So this takes place by vascular bundles. Yeah, so this takes place by the vascular bundles, and the process is called as translocation. Especially the process of transport of food is called as translocation. Clear? So for this purpose the vascular bundles are required, and these vascular tissues are xylem and phloem tissues. Clear? Now we have to discuss about the means of transport. So here is the means of transport. In case of plants, two means of transports are there, by the passive transport or by the active transport. So the process of transportation in plant is going to take place passively or actively. So here is the passive transport and it may be the active transport. Now what is the difference between passive and active transport?
in passive transport there is no requirement of energy or the no requirement of ATP. So here no ATP required. In case of active transport, ATP is required. Clear? The second important thing is, in passive transport, the transport of substances is going to take place from its high concentration to low concentration. High concentration to low concentration till the equilibrium is achieved. So till the equilibrium is achieved. Clear? Now in case of active transport, this active transport takes place against the concentration gradient by the consumption of ATP. So it can takes place against the concentration gradient. Clear? So it can takes place against the concentration gradient also. Now we will discuss it with an example. Suppose this is a cell. ठीक है, ये कोई सेल है हमारे पास. इसके बाहर हमारे पास ये किसी चीज के 100 पार्टिकल्स हैं. ठीक है, अंदर क्या है, कंसंट्रेशन बिल्कुल 0 है और बाहर कंसंट्रेशन क्या है, 100 है. तो पैसिवली यदि ये ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियस है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट करेंगे. कब तक ट्रांसपोर्ट करेंगे, जब तक दोनों साइड 50-50 वाली कंडीशन नहीं आ जाती. इट मींस इक्विलिब्रियम दोनों साइड नहीं बन जाता, तब तक ये मूव करेंगे पैसिवली. लेकिन हमें चाहिए कि ये 100 मॉलिक्यूल्स पूरे इस सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए. तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, एनर्जी का यूज करेंगे. तो यहां पर एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी होगा एंड दैट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. और एनर्जी एक्सपेंडिचर से हम पूरे 100 पार्टिकल्स अंदर भी ले सकते हैं. बाहर कंसंट्रेशन क्या हो जाए, 0, और पूरे 100 पार्टिकल्स क्या आ गए, इस सेल के अंदर की साइड आ गए. तो ये पूरे 100 पार्टिकल्स अंदर आ सकते हैं, या अंदर 80 बाहर 20 भी हो सकता है, अंदर 90 बाहर 10 भी हो सकता है. ठीक है, इट मीन्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट भी यहां पर ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस हो सकती है. नाउ दिस passive transport is not sensitive towards temperature and inhibitors. Clear? So it is not sensitive towards temperature and inhibitors, but the active transport is sensitive towards temperature and inhibitors also. Clear? So this is the type of passive and active transport, and this is the difference in between both of these two transports. Now passive transport is basically of 3 types, that is diffusion, facilitated diffusion and osmosis. We are going to discuss all these 3 one by one. Firstly, we are going to discuss here the process of diffusion. What is diffusion? It is generally a type of passive transport. So here we are going to discuss about diffusion. This diffusion is the type of passive transport. So it is a passive transport. And in this type
the transport of solute particles is taking place. So what is going to take place here? Transport of solute particles from its high concentration to low concentration. From high concentration to low concentration. The solute may be solid, liquid or gas. Clear? So here the transport of solute particles is taking place, which may be solid, liquid or gas, and the solute particles are transported according to the concentration gradient from high concentration to low concentration. Now, what are the factors affecting the rate of diffusion? So here the factors affecting the rate of diffusion. So there are some factors also which affects the rate of diffusion. The first important factor is temperature. Clear? So the first important factor is temperature, which is going to affect the rate of diffusion. So here is temperature. Higher will be the temperature, faster will be the rate of diffusion. ठीक है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे डिफ्यूजन की रेट क्या होगी, फास्ट होती चली जाएगी ना. जनरली हम देखते हैं जो हॉट सीजलिंग फूड है, गर्म खाना जो बनता है, उसकी स्मेल हमें काफी दूर तक स्मेल करने को मिलती है, लेकिन जो खाना फ्रिज में रखा हुआ है क्या उसकी स्मेल हमें आती है? नहीं आती है. इट मीन्स जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वहां डिफ्यूजन ज्यादा हो रहा है. इट विल इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, food particles. That's why it smells at a distance. So here higher the temperature, faster will be the rate of diffusion. Faster will be the rate of diffusion. Clear? So temperature affect the diffusion very much. Nextly, the density. The next important thing is, or the next important factor which is going to affect the diffusion, that is density. This is explained by Graham, and the law is called as Graham's law. According to Graham, density is inversely proportional, or diffusion is inversely proportional to the ratio of density. What is here? It is explained by Graham. That's why it is called as Graham's law. And according to the law, rate of diffusion is inversely proportional to the square root of density. Clear? This is the formula. So density is also going to affect the rate of diffusion. Third one is the concentration gradient. Of course, concentration gradient is also an important factor. So the third one is concentration gradient. Higher the concentration gradient, third factor is concentration gradient. Higher the concentration gradient, higher the concentration gradient, faster will be the rate of diffusion. So here, faster diffusion. क्लियर? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा होगा तो डिफ्यूजन क्या होगा? फास्ट होगा. क्लियर?
Next one thing, that is surface area. Next important factor is surface area. क्लियर? सरफेस एरिया भी, जब सरफेस एरिया ज्यादा होगा, हम देखते हैं हमारे लंग्स में एल्वियोलाइज प्रेजेंट है और ये एल्वियोलाइज सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं. क्लियर? तो सरफेस एरिया को ये इंक्रीज कर देते हैं जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस जो है वो ज्यादा हो सके. सो हियर हायर द सरफेस एरिया, फास्टर विल बी द रेट ऑफ डिफ्यूजन. सो हायर द सरफेस एरिया, higher the surface area, faster will be the rate of diffusion. Clear? So these are some factors which affect the rate of diffusion. Clear? So this is all about the diffusion. Now we are going to discuss about the second important type of passive transport, that is facilitated diffusion. And before going to facilitated diffusion, we are also need to know that the fat soluble particles move faster or easily by the process of diffusion. So here fat soluble particles moves easily, क्योंकि यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें पता है किसकी बनी हुई होती है, फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई होती है. तो वहां पर फैट सॉल्युबल पार्टिकल्स का मूवमेंट इजीली हो जाता है, वाटर सॉल्युबल पार्टिकल्स का मूवमेंट इतना इजी नहीं होता है. क्लियर? सो दिस इज अबाउट द डिफ्यूजन. Second type of passive transport is facilitated diffusion. So here is facilitated diffusion. Second type is facilitated diffusion. As the name indicates, here for the process of diffusion, फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय एनी ऑफ द पार्टिकल. ठीक है, इसके लिए हम थोड़ा सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखते हैं. तो यहां पर मेनली जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा ये किसी कैरियर के साथ होगा. क्लियर? सपोज दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, ना छोटा सा स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मैं ड्रॉ कर रही हूं यहाँ. So these are the lipid particle. Bilayer of lipid is this. So these are the lipid particles. And extrinsic and intrinsic proteins are also there. So here I am drawing the protein particles. This is the intrinsic protein and here is the extrinsic proteins. Clear? So here is the extrinsic proteins. Basically जो ये extrinsic proteins particles होते हैं, ये protein particles as a carrier behave करते हैं ना. काफी सारे substances ऐसे होते हैं जो इस protein के साथ attach होके अंदर transport होते हैं. Clear? So this is the outer side of the cell and this is the inner side of the cell. This is out and this is in. Suppose this is a particle which have to be moved inside the cell. ये कोई पार्टिकल है जिसको सेल के अंदर मूव करना है. ये इस प्रोटीन के साथ अटैच होगा और इस प्रोटीन के साथ अटैच होके ये अंदर मूव करेगा. दिस इज द पार्टिकल विच इज अटैच्ड विद द प्रोटीन. क्लियर? तो ये इस प्रोटीन के साथ कहा मूव कर जाएगा, अंदर मूव करेगा. एंड दिस प्रोटीन प्रोवाइड द फैसिलिटी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. जैसे ही ये सेल के अंदर आएगा, पार्टिकल को तो सेल ने एब्जॉर्ब कर लिया और जो प्रोटीन था, दिस इज द पार्टिकल विच इज गेटिंग एब्जॉर्ब्ड बाय द सेल एंड द प्रोटीन अगेन मूव्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. फिर प्रोटीन वापस कहाँ होगा, जहां से आया था वहीं वापस चला जाएगा. दिस विल हैपन विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी.
ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस भी बिना एनर्जी के यूज के ही सेल के अंदर हो रही है। तो आउटर मेम्ब्रेन से या आउटर पार्ट से इनर पार्ट में यदि किसी सब्सटेंस को अंदर ट्रांसपोर्ट होना है, देन द प्रोटीन्स आर प्रोवाइडिंग फैसिलिटी। क्लियर? सो दिस इज हेल्प्ड बाय द कैरियर प्रोटीन्स। These proteins are behaving like carrier particle here. So this process is helped by the carrier proteins. Clear? This is the process of facilitated diffusion. The proteins are basically which are used here, that are the porins type of protein. These porins are basically found on the outer membrane of mitochondria and plastids. So which type of proteins are used here? The carrier proteins, they are the porins. Porins are the type of carrier protein. Where these are found? These are found on the outer membrane of mitochondria and plastids. प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन पे ये पोरिन्स प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं एंड दीज पोरिन प्रोटीन्स हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंसेस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द cell, and these are behaving as carrier proteins. They provide facility to the substance for the movement of inside. One more thing is there, that is aquaporins are also there. Clear? Aquaporins means the water channels or the water channels which are going to transport the substances. So second type of protein, that is aquaporins. Aquaporins means the water channels. So water channels are also there which are going to help in the process of transport. I'm sorry. Two types of particles can be moved through these aquaporins, and these two types of particles are polar particles and non-polar particles. Clear? Or facilitated diffusion. Basically, in facilitated diffusion, the two types of particles can move. That one is polar particles and the non-polar particles. What are the polar particles? Like sodium ion, chloride ion. These are the polar particles, and the non-polar particles are nucleosides, amino acids, etc. Okay, so these are the non-polar particles which are going to move from outside to inside of the cell. Okay, this is all about the diffusion and facilitated diffusion. One more type of passive transport is there, that is called as osmosis. So about osmosis we are going to discuss in our next lecture. And one more thing, that is symplast, apoplast pathways are also going to discuss in the next lecture. So don't miss the next lecture, and thank you for watching.